ब्रजेश्वर गुड गुड मॉर्निंग कौन पचार रे हे जो Cp - Cv = R R इज कोन r टा गैस कांस्टेंट add-on which system can do on expanding the gas क्वेश्चन अछि तो थिला क्वेश्चन अछि पठाइबो क्वेश्चन नहीं तो आंसर डेट सुनतो से देछि work done which system can do on expanding the gas per mole for a degree increasing in temperature से आटाला से मते पठाइबो क्वेश्चन मु जानि पारनी कोन पचार यस सर तो कोहाला पठा जीवो पुनी क्लास रे पुनी पचारे आवश्यकता कोन अछि तो पठाइबो जदि जोडा आसुनी सर संग पे गुटे पठाइबो Cp - Cv r कोन आटा तो गैस कांस्टेंट यू डोंट नो इट अरे केमिस्ट्री तो आरंभ होई तो सेटू गैस कांस्टेंट आट तो जानथिबो से गैस कांस्टेंट जान से ऑप्शन है सेटा नथला से इदिया पचल नहीं सेटा ऑप्शन तो क्वेश्चन ना बुझी पार नथिबो सेत पे से ऑप्शन तो पाउनो आ कोन से पचारथो तू केमति कहलु मु निजे भी क्वेश्चन बुझी पारनी क्वेश्चन जदि होउची क्लास समय रे ओटे फोटो उठैले पठैलु वर्तमान पढे आरंभ करनी पठैलु तो क्वेश्चन सी स्टूडेंट्स we will start देख बाबा देख ब्रजेश्वर देख क्लास वाला पर क्वेश्चन पठे दू डिस्कस करिवा देख यस सर students be concentrated now okay so in the previous class we have discussed about your standard free energy of formation नहीं standard free energy formation ऊपर हमने कथा हेतला now student write down standard enthalpy of formation standard enthalpy of formation एका जिंस बस लिखिबारे अलगा अछि रिप्रेजेंटेशन टी अलगा सेत पे ता नाटा भी अलगा standard enthalpy of formation standard enthalpy of formation okay हां सर एबे असली सर स्टार्ट हला न सर आपन एबे स्टार्ट हला okay देखो standard enthalpy of formation it is written as delta h f naught okay एको एबोली भाबे लिखा जाय तो पिला माने व्हाट विल बी योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहले हमें कोन बुझिबा जेमति काली पढितला स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन सेमति स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दा कोन होबो द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन at 25 degree centigrade and 1 atm pressure is called as standard heat of formation बुझियो छी ना नहीं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गोटे फॉर्मेशन रिएक्शन समय रे जति कि तमर एंथैल्पी चेंज होउची दैट इज कॉल्ड एज योर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जदि सही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 1 atm प्रेशर रे तू मेजर करूछु देन इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ओके खाली जहां पढिथिले सही सेम जिंस यू कैन राइट द डेफिनेशन करि परिबो रिप्लाई वन लिखि परिबो निजे डेफिनेशन लिखि परिबो हेलो यस सर कैन यू राइट जस्ट खाली जोटा तमे लिखितला फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन सही जगह लिखिबो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आउ सब सेम रहबो ओके यस सर standard heat of formation by enthalpy of formation thermodynamically stable form of elements मानन को पई जीरो बोली निया जाय बुझियो जी ऑलरेडी इटा में डिस्कशन करिचे काली सो राइट डाउन पिला माने जदि तुमको डेल्टा एच रिएक्शन पचारची गोटे रिएक्शन तुमको डेल्टा एच पचारची एंथैल्पी चेंज पचारला देन यू हैव टू राइट समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ standard enthalpy of formation of the reactant standard enthalpy of formation of the product minus standard enthalpy of formation of the reactant रहबो ना नहीं ओके बच्चों क्लियर लिखि परिबो सिंपल फार्मूला नथिंग एल्स आगे सर ओके नथिंग एल्स आ गोटे जिंस एडी मन रखिबो जदि तमरो डेल्टा एच फॉर्मेशन टा इफ डेल्टा एच फॉर्मेशन write down if your standard enthalpy of formation or delta H formation of a compound is equals to negative যদি এটা negative way then it will be more stable okay if your delta H formation standard enthalpy of formation of the compound it will be positive then it will be unstable okay जदि कोनस जगह देखिलु एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ना तोरो नेगेटिव देइची देन इट विल बी मोर स्टेबल जदि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ना तोरो पॉजिटिव देइची इट विल बी अनस्टेबल अरे करी हबो यस सर
Okay, this is the process. जेमती काली मु देइथिली प्रोडक्ट रो तमने रिएक्टेंट को माइनस करतला फ्री एनर्जी फॉर्मेशन को सेमती ए जगह रे करिवो नो न्यू थिंग ओके सेम थिंग सेम प्रोसीजर सब एका भलिया क्वेश्चन भी तमन से पचारिबो ओके नाउ राइट डाउन हीट ऑफ combustion heat of combustion heat of combustion heat of combustion पिला माने व्हाट इज combustion combustion कहले कौन बुझिबा ये combustion क्या होता है what is your combustion heat of combustion or you can say it is enthalpy of combustion also you can also say enthalpy of combustion heat of combustion or enthalpy of combustion what is your combustion process combustion क्या होता है जलाना किसी चीज को जलाना होता है combustion अरे ठीक ना नहीं मु कोनोस जिंस को जदी जळेली ताको मोर combustion को जाय ना नहीं जळेला पे कोन करा जाय हमर जो केमिस्ट्री जो सब combustion reaction लिखा जाय सेटा सब केमती लिखा जाय जदी कोनोसी सब्सटेंस जदी ऑक्सीजन से तो रिएक्शन करे दैट इज कॉल्ड एज योर combustion reaction अरे करेक्ट ना Yes, sir. Yes, sir. तो जदी मैं एटी कहबी मोर CH4 अछि मिथेन अछि मु वर्तन यार combustion reaction लिखिबी तो तू कहबो कोन सर मिथेन डा केमती ऑक्सीजन से तो रिएक्शन करिकी एठी आपन को दोची कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर कोन combustion reaction सेम तू कहबो सर मोर एटी कार्बन अछि जेतबे से ऑक्सीजन से तो रिएक्शन कला ये फॉर्मेशन करिवो कार्बन मोनोऑक्साइड दिस इज ए combustion reaction अगेन कार्बन जदी तोर एटी ठीक रहो अगेन जदी तोर एटी कार्बन कोन कला ऑक्सीजन से तो रिएक्शन करूची वेट बच्चों यहाँ पे कार्बन अच्छी ये यदि ऑक्सीजन से तो रिएक्शन कला इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज आल्सो कंबस्टन रिएक्शन हां कंबस्टन रिएक्शन साधारणतः हाइड्रोकार्बन कंपाउंड उडारा कंबस्टन रिएक्शन दिए बुझियो छी ना नहीं कारण हम जो फ्यूल सब यूज करूचे ऑल मैक्सिमम जनरली कंपाउंड उडा होचंदी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड सो समान जनरली ऑक्सीजन से रिएक्शन करूचंदी और कंबस्टन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करचंदी बुझेला ना नहीं तो दिस इज द कंबस्टन रिएक्शन हला जस्ट वन एग्जांपल देली कंबस्टन रिएक्शन कोन केम जानिबो so what is your heat of combustion and enthalpy of combustion गोटे combustion reaction है जते enthalpy change हबो that is called as your enthalpy of combustion अरे ठीक ना नहीं गोटे combustion reaction है जति के amount रो heat exchange होची बा enthalpy change होची that is called as your enthalpy of combustion or heat of combustion so what you have to write the amount of heat released the amount of write down बच्चों the amount of heat released the amount of heat released due to the complete combustion of due to the complete combustion of लिख लो 1 mole of substance 1 mole of substance 1 mole of substance with excess of oxygen okay the amount of heat released due to the complete combustion of 1 mole of substance with excess of oxygen okay जेतवाले तमरा गोटे जिंस कंप्लीटली बर्न हबो 100% बर्न हबो with excess of oxygen that is the enthalpy change and that enthalpy change is called as enthalpy of combustion अरे बुझियला clear yes sir yes sir called as your enthalpy of combustion जदि enthalpy of combustion दा तो कोन करलु स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करलु then that is also called as standard enthalpy of combustion अरे बुझियबो ना नहीं अच्छा जदि तोते गोटे रिएक्शन रे डेल्टा एच कंबस्टन देइची एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन दिया जाइची देन हाउ यू विल कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन गोटे केमिकल रिएक्शन गोटे कंबस्टन रिएक्शन रे तते डेल्टा एच कंबस्टन दिया जाइची एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन दिया जाइची देन हाउ यू विल कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन okay so for that you have to know a formula write down the enthalpy of a reaction delta H of the reaction जदि फॉर्मेशन देइथिबो ताल तमे कोन करलो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट
किंतु जदि तुमको डेल्टा एच कंबस्टन देइथिबो देन यू हैव टू डू समेशन ऑफ डेल्टा एच कंबस्टन of the reactant summation of delta H combustion of the reactant minus summation of delta H combustion of a product. Delta H combustion of a product. Summation of delta H combustion of the reactant minus summation of delta H combustion of the product. अरे बुझेला? Yes sir. Yes, sir. तो जदि तुमको डेल्टा एच कंबस्टन दिया जाइथिबो क्वेश्चन रे देन सिंपली यू हैव टू फॉलो दिस तमे एटी रिएक्टेंट रो प्रोडक्ट रो जदि कंबस्टन एंथैल्पी टा को माइनस करूचो देन यू विल गेट योर एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन तमाननको कोन मिलिबो एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन टा मिलिबो बुझियो छि ठीक मन रखिबो केतेबेला रिएक्टेंट रो प्रोडक्ट को माइनस करा जाउची केतेबेला प्रोडक्ट रो रिएक्टेंट को माइनस करा जाउची वर्तमान पर्यंत हमें जेतेटा भी एंथैल्पी चेंज देखिलेनी सब जगह रे कोन करूथिले प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किंतु ए जगह केवल गोटे उल्टा हला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हला ठीक ना नहीं ए जगह तमरो गोटे उल्टा हला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट एमती लेखि मन रखिबो नले मिसी जिवो गुळा मिला ही जिवो कोडा तमे प्रोडक्ट रो कोडा रिएक्टेंट माइनस हो कोडा रिएक्टेंट रो प्रोडक्ट माइनस हो भूली जिवो तो एठी तमरो गोटे रहला कंबस्टन पई तमरो कंबस्टन पई रिएक्टेंट रो प्रोडक्ट को तमे माइनस करियो पडुची हला आउ सब जतेटा वर्तमान जे हम पढिचे सेतरा हमें प्रोडक्ट रो रिएक्टेंट को माइनस करथले क्लियर Yes sir. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन बुझी पारलो व्हाट इज योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन जदि तमे स्टैंडर्ड कंडीशन रे एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को मेजर करूछो दैट इज कॉल्ड एज योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन अरे ठीक ना नहीं at 298 kelvin Yes, 1 sir. atm pressure 298 kelvin 1 atm pressure okay then bachcho another new term that is your calorific value another new term that is your calorific value just note down calorific value what is your calorific value कहले पिला माने कोन बुझिबा तमे देखिजो हमर जतोले डाइट दिया जाय कोआ जाय जे एतिकी कैलोरी तू डाइट खा सेतिकी कैलोरी डाइट खाना एतिकी कैलोरी तू कंट्रोल करी खा अधिक कैलोरी खाउछु मोटा हे जाउछु जे पतला अछि ताको कोआ जाउछि अधिक कैलोरी खा तो देह रे लागिबो हां अरे कोआ होछि ना नहीं Yes sir. ओके सो दैट कैलोरिफिक वैल्यू कोन से विषय टिके डिस्कशन करिवा प्रथमे टिके डेफिनेशन लिखि दियो द कैलोरिफिक वैल्यू पर्टिकुलरली पिला माने गोटे फूड आइटम रो किबा जे कोनसी गोटे फ्यूएल रो ओके गोटे इंधन रो किबा जे कोनसी गोटे खाद्य पदार्थ रो बा गोटे फूड आइटम बा गोटे फ्यूएल रो साधारणतः कैलोरिफिक वैल्यू को मेजर करा जाय सो राइट डाउन द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूएल और फूड द कैलोरिफिक वैल्यू लिखि दोची the calorific value of a fuel or food is the amount of heat in calories or joule. You can also give this value in joule also. Joules calorie भी परिबो joule भी परिबो produced from the complete combustion of produced from the complete combustion of 1 gram. This term is important. 1 gram of the fuel or the food. 1 gram of the fuel or the food. 1 gram of the fuel or the food. Okay, so this is called as your calorific value. पिला माने हमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ने कोन देखिले हमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कोन देखिले गोटे मोल पई सेटा मेजर करा जाउची फॉर 1 मोल बट कैलोरिफिक वैल्यू इट इज मेजर्ड फॉर 1 ग्राम गोटे ग्राम पई तमरा केते एनर्जी बाहर होची सेटा तमे मेजर करिवो दैट इज कॉल्ड एज योर कैलोरिफिक वैल्यू ओके साधारणतः फ्यूएल और फूड आइटम मानकर कैलोरिफिक वैल्यू कैलकुलेट करा जाय so calorific value of a fuel or food is the amount of heat in calories or joules produced from the complete combustion of 1 gram of the fuel or the food अरे बुझियला ना नहीं Yes sir. Yes, ओके sir. जदि मु कहिबी मोर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज अछि मो पाखरे केते मोल रो ग्लूकोज अछि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज
1 mole of C6H12O6. I have 1 mole of glucose, and that 1 mole of glucose, it will give rise to 2840 kilojoule. 2840 kilojoule of energy. Then I will ask you, what is the calorific value of the glucose? What will be the calorific value of glucose? Calorific value of glucose केते हबो? What you will do? हमें कौन जान लो जे गोटे मोल रो ग्लूकोज जते बेले तमरो तार ऑक्सीडेशन होउची से तमरो 2840 किलोजूल ऑफ एनर्जी दोउची. 1 मोल ऑफ ग्लूकोज माने केते ग्राम? It is equals to molecular mass of the glucose. अरे करेक्ट और नॉट? गोटे मोल ग्लूकोज माने तार मास केते? मोलिकुलर मास. जो मन सब करूछन सेकंड बैच रे मैसे कांसेप्ट रे पढी दिबे जे गोटे मोल ग्लूकोज माने केते? It is equals to molecular mass. Okay, so C6H12O6 रा molecular mass केता हबो? 342 ग्राम. ठीक कहली? या 180 ग्राम? You people all are silent. तुमको molecular mass तमे जल्दी ओटा करी कहि दो ना. Molecular mass of C6H12O6 केमदी बाहरिबो? 12 into 6 गोटे कार्बन रा एटॉमिक मास 12. 12 into 1. तो 6 हेले मल्टीप्लाई करा गला. हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 ताको 12 सहित मल्टीप्लाई करिवो. ऑक्सीजन रा केते? 16 केतेटा अछि? 6 टा. मिसेबु केता हबो? 180 ग्राम. अरे होजी ना होनी? Yes, sir. Yes, sir. सेटा कहया कहि परनो. गोटे मोल ऑफ ग्लूकोज रो एति की तमर दोची एनर्जी. ता माने मइटी कहि परिबी कि जे मोर 180 ग्राम ऑफ C6H12O6 give rise to 2840 kilojoule of energy. तो मते कैलोरीफिक वैल्यू पचाची माने मु केते पई एनर्जी एक्सचेंज ता देखिबी. केते पई एनर्जी एक्सचेंज देखिबी हाउ मच अमाउंट ऑफ द 1 ग्राम 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस. तो 180 ग्राम पई जदि 2840 किलोजूल हला ताले गोटे ग्राम पई केते हबो? 2840 divided by 180. It will be equals to 15.78 kilojoule per gram. Okay, kilojoule per gram, 15.78 kilojoule per gram. So this is the calorific value of the glucose. This is the calorific value of the glucose. होंगे नहीं? सर एटा टिके बुझाइ दे सर नेट टा कटेइतला. अच्छा देखे 180 ग्राम पई तोर एनर्जी होची 2840 किलोजूल. कारण देइची क्वेश्चन जे गोटे मोल रो ग्लूकोज रो कैलोरीफिक सॉरी हमर एनर्जी वैल्यू होची 2840 किलोजूल. ता माने गोटे मोल ऑफ ग्लूकोज एतिके एनर्जी तते दोची. तते पचाची कैलोरीफिक वैल्यू केते हबो ग्लूकोज रो? तो वर्तमान डेफिनेशन देखिलु कैलोरीफिक वैल्यू कोन? The calorific value of any fuel or food is the amount of heat in calories or joule produced from the complete combustion of 1 gram of the fuel or the food. गोटे ग्राम रो fuel किंबा food रो complete combustion नु जेतिके amount रो energy produce हबो that is called as calorific value. तो तू देखिलो एटी 1 मोल पई देइची 2840 किलोजूल. 1 मोल माने केते ग्राम? 1 मोल माने केते ग्राम? हाउ मच ग्राम? बेटा कह. नेट कट जेतला जो 1 मोल केते ग्राम हबो तोरो? हेलो पड़े वाला से तार नेट कटि गला अथरे. हेलो हेलो सर. एक बार तोर कटि गला अथरे. आगे सर कटेइतला सर एटी नेट प्रॉब्लम रहउची. अच्छा अच्छा अच्छा. तो तू एदी जदी सब दिन प्रॉब्लम रहउची ताले से रिकॉर्डेड वीडियोडा मागी के देखिबू. बुझिलो नै? ओडे आगे पटके बुझी परिबुनु हरान हो. देखे बुझिलो एटा बुझी परलु ना बुझिनु? आगे आगे देखे 180 ग्राम पई तोर हला 2840 किलोजूल. तो गोटे ग्राम पई केते हबो तते बाहर करियार अछि. जेति के हबो दैट इज कॉल्ड एज द कैलोरीफिक वैल्यू. बुझिलो? आगे आगे. So this is your calorific value. अच्छा पिला माने गोटे नॉर्मल पर्सन को तार डेली वर्क करिया पई केते दरकार एनर्जी? हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड पर डे? 3000 किलो कैलोरी. 3000 कैलोरी. 3000 किलो कैलोरी बाबा. कैलोरी हेले से मरि जीवो एतिक एनर्जी रे. तार दरकार आउरी एनर्जी 3000 किलो कैलोरी. Okay, so a normal person needs 3000 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे. तो 3000 किलो कैलोरी पे हमें सब खाइबा खाउजे. जे अधिक खाइला से मोटा हे गला, जे कम खाइला से पतला हलाई रहला. तो
तो कार्बोहाइड्रेट ऑयल फैट्स रहला तो विटामिन्स मिनरल्स प्रोटीन सॉल्ट विभिन्न प्रकार जिंस रो कैलोरी काउंट करके हमें खाइले डाइट बैलेंस रहबो दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट ओके किछिटा क्वेश्चन पचारि पारे बैलेंस डाइट ऊपर करे यदि हो समय किंतु ये हला तमर नॉर्मल मेथड जो जगह रे पचारिबो कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम पे कैलकुलेट करबो हबो जिबा आगु जिबा Yes, sir. Yes, yes sir. sir Yes, sir. व्हाट आर योर एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन अच्छा पिला माने तुमको किछिटा क्वेश्चन ने पचारि दिबो मन कर मु तुमको गोटे क्वेश्चन देली C2H6 C3H8 आ गोटे तमरा C4H10 C2H6 C3H8 C4H10 बुझियला अरे हंगी नहीं बुझी पालो ना बुझी पालोनी Yes, sir. Yes, sir. yes sir कौन लिखी Again, sir. मु कौन लिखी छी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड गुडा को लिखी छी यार ना कोन C2H6 रो ना कोन Methane. C3H8 रो Methane. मिथेन Propane. अरे तू मिथेन दा कहलानी C4H10 Propane. ओके ओके Butane. ओके ब्यूटेन मु पचारिबी एमान सब मन कर गोटे गोटे वाले फ्यूएल हला मु पचारिबी एकर डेल्टा एच कंबस्टन दा कोन हबो कार अधिक हबो कार कम हबो कार डेल्टा एच कंबस्टन वैल्यू अधिक हबो कार कम हबो तमे ऑर्डर लेखिक मत देखेबो क्वेश्चन एबेला पचारिबो तमे ओके यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ डेल्टा एच कंबस्टन वैल्यू कहा पे अधिक हबो कहा पे कम हबो यू हैव टू फाइंड आउट एई बळे क्वेश्चन से त माने केमते डील करिवो जदि तुमको कोन जगह हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स देची से जगह डेल्टा एच कंबस्टन वैल्यू जदि ऑर्डर पचारला देन हाउ यू विल डील विथ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओके तो सेति में लिखो डेल्टा एच कंबस्टन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम डेल्टा एच कंबस्टन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम जेते कार्बन एटम संख्या अधिक थिबो सेते तमरो डेल्टा एच कंबस्टन अधिक रहइबो आज बुझियला ना नहीं yes sir जदि कार्बन एटम संख्या एका हे गला माने कर एठी मु तुमको देबी तीनटा कंपाउंड जोथरे की कार्बन एटम रो संख्या होची सेम ताल तमे पुनी कोन करिवो जदि तमर नंबर ऑफ कार्बन एटम संख्या सेम हे गला देन यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन तमर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जते रहइबो अधिक देन डेल्टा एच कंबस्टन विल बी मोर जते तमर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अधिक रहइबो तमर डेल्टा एच कंबस्टन वैल्यू अधिक रहइबो इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल कार्बन एटम सेम जदि कंपाउंड मानकर कार्बन एटम सेम अछि ताहाले नंबर ऑफ हाइड्रोजन टाउ चेक करिवो जहार नंबर ऑफ हाइड्रोजन जेते अधिक थिबो सेते तमरो कोन हबो डेल्टा एच कंबस्टन अधिक हबो अच्छा जदि बर्तन में कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम दीटा जाको नंबर सेम हे गला ताहाले कोन हबो ओके ता पे भी गोटे कंडीशन देखाई छी जदि कार्बन एटम संख्या और हाइड्रोजन एटम संख्या दीटा जाको समान हला देन यू हैव टू चेक द ब्रांचिंग ऑफ द कंपाउंड ब्रांचिंग बुझी परछो कंपाउंड ब्रांचिंग ऑर्गेनिक्स रे अछि हमर स्ट्रेट चेन कंपाउंड ब्रांच कंपाउंड साइक्लिक yes sir कंपाउंड yes sir ओके तो जदि तमरा ब्रांचिंग देखियो पड़ियो तुमको जदि कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम रो संख्या जदि समान हला देन यू हैव टू चेक द ब्रांचिंग तो ब्रांचिंग रे कोन हबो पिला माने जते तमरा ब्रांचिंग अधिक हबो सेते तमरा कंबस्टन वैल्यू कमिवो so delta is combustion inversely proportional to your branching if your carbon atom and hydrogen atom equal carbon atom and hydrogen atom are equal जदि कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम इक्वल हुए then you have to check the branching that much तापर ब्रांचिंग इक्वल हेले एमते हो नाही जदि हबो ब्रांचिंग पर्यंत देइतो ब्रांचिंग तमर एपट सेपट हेकि थिबो तमे देखिबो जदि ब्रांचिंग अधिक रहउची ताल तमर डेल्टा एच कंबस्टन वैल्यूटा कमिवो दैट मच तीनटा पॉइंट को मन रखिबो देन यू कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ योर डेल्टा एच कंबस्टन ओके प्रथमे कोन रहिला जदि कार्बन एटम संख्या अधिक रहइबो ताले डेल्टा एच कंबस्टन अधिक हबो जदि नंबर ऑफ हाइड्रोजन अधिक रहिला देन डेल्टा एच कंबस्टन अधिक हबो जदि ब्रांचिंग अधिक रहिला देन डेल्टा एच कंबस्टन कमी जिवो अरे बुझिला ना नहीं ए जो क्वेश्चन ना देती तार ऑर्डर कोन हबो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन C2H6 C2H6 रो कोन अधिक ना कम हबो less than of लेस देन हबो काहे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम तो प्रथमे देखिबो तब नंबर ऑफ कार्बन एटम देखले एटी 3टा कार्बन एटम एटी 3टा कार्बन एटम एटी 4टा कार्बन एटम so number of carbon atom एटी अधिक अछि so the delta H combustion will be more here हबो ना नहीं if I will give you माने कर मु देली C2H6 if I will give you C2H4 if I will give you C2H2 यार ना कोन C2H6 रो ना कोन
Ethane. Ethane. What is the name of your C2H4? Ethene. Ethene. Ethyl. Ethyne. Ethyl. Okay. तो पचाला डेल्टा एच कंबस्टन वैल्यू कौन हबो? डेल्टा एच कंबस्टन वैल्यू कौन हबो तो मानो पचाला कौन हबो? कार्बन एटम संख्या सेम अछि greater than C2H4 greater than C2H2. ओके कार्बन एटम संख्या एटी ऑल सेम अछि एटी रहला दीटा Same एटी भी रहला दीटा एटी भी रहला दीटा यदि कार्बन एटम संख्या सेम थाए देन यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटी रहला 6 टा एटी रहला 4 टा एटी रहला 2 टा Beta. तो 6 4 2 दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर डेल्टा एच कंबस्टन बुझियला Yes, sir. ओके और जो ब्रांचिंग रे जत मनकर आईडिया थिबो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढितो किछि जदि मने अछि ताले म कहूची तमरा मने कर स्ट्रेट चेन कंपाउंड देला मने कर मु कहबी मो पाखर अछि n पेंटेन कोन n पेंटेन जदि मु कहबी मो पाखर अछि आइसो पेंटेन सुनिछ ना सुनिछ आइसो Yes sir. ऊपर जदि तो मु और कहबी लाइक. मो पाखर अछि नियो पेंटेन ओके नियो पेंटेन ओके n पेंटेन आइसो पेंटेन नियो पेंटेन जे न जानि छि ना गुडा को व्यस्त दरकार नै ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढेबी हला एडी जे दरकार हो सित पय कहूची n पेंटेन आइसो पेंटेन नियो पेंटेन कोन हबो ब्रांचिंग कोडी अधिक हबो New pentane branching अधिक. नियो पेंटेन प्रोजेक्टर कहूची Yes sir. ओके वेरी गुड सो n पेंटेन आइसो पेंटेन नियो पेंटेन तो नियो पेंटेन ने ब्रांचिंग अधिक रहइबो देन दैट ऑफ योर आइसो पेंटेन देन दैट ऑफ N That pentane. of N pentane. ओके तो पिला माने एटा जेतले करा जीवो स्ट्रक्चर तमे देखिवो तार ब्रांचिंग अधिक रहइबो जदि एठी गोटे सेंट्रल कार्बन एटम रहे ताले नियो पेंटेन तमे एई बळे किछि ब्रांचिंग देखियो पाइबो जदि तमर आइसो देखियो पाइला ताल तमर ब्रांचिंग ला किछि एई बळे आबो आ जदि हमरा एन पेंटेन देखुछो ताले स्ट्रेट चेन कंपाउंड हबो बुझि पालो तो तमे निजे जानि परिबो जे ब्रांचिंग कोड अधिक होउछ देखो एठी तमर नियो पेंटेन तमर तीनटा ब्रांच हबो ओके एठी तमर दुईटा ब्रांच हबो आइसो पेंटेन रे और तमर एठी एन पेंटेन रे तमर एठी नो ब्रांच अरे ठीक ना नहीं Yes sir. Yes, ओके sir. कोड अधिक हबो तमर डेल्टा एच कंबस्टन दा दिस New pentane. ब्रांचिंग जते अधिक रहइबो डेल्टा एच कंबस्टन सेते कमी जीवो Right. इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओके तो तमर एठी एन पेंटेन रो डेल्टा एच कंबस्टन अधिक रहइबो देन आइसो पेंटेन रो देन एठी आसीबो नियो पेंटेन रो तो डेल्टा एच कंबस्टन वैल्यू विल बी लेस हियर करि परिबो एबळिया Yes sir. ओके तो जदि तुमको डेल्टा एच कंबस्टन देइची कैलोरीफिक वैल्यू पचाची ताले कोन करिवो राइट डाउन कैलोरीफिक वैल्यू फार्मूला लिखि दे कैलोरीफिक वैल्यू को पिला माने कोआ जाय हमर फ्यूल एफिशिएंसी मध्य मोर मन नथिला मन पडला राइट डाउन इट इज आल्सो कॉल्ड एज योर फ्यूल एफिशिएंसी बोली मध्य कोआ जाय दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच कंबस्टन divided by molecular mass okay so delta H combustion divided by molecular mass you will get your calorific value abba Yes sir. okay Yes, sir. okay then write down pila mane heat of neutralization write down heat of neutralization Sir, heat oh sir, calorific value टा जो fuel efficiency को हला सेटा पूछेलानी अरे कुआ वाला फ्यूल एफिशिएंसी गोटे पेट्रोल रो फ्यूल एफिशिएंसी केते पेट्रोल जालिले तते सेदरु केते एनर्जी मिलुची बुझि पारछु ना नहीं 1 ग्राम ऑफ पेट्रोल रु तते केते अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलुची डीजल जदी गोटे ग्राम जालिबी ताहले मते केते एनर्जी मिलुची केरोसिन जदी गोटे ग्राम जालिबी मते केते एनर्जी मिलिबो मु गैसोलीन जदी गोटे ग्राम जानिबी ताहले मते केते एनर्जी मिलिबो हां तो समस्तଙ୍କର कोन एनर्जी टा सेम होबो समस्त कोन एका एनर्जी देबे पेट्रोल जति जाले जति 1 ग्राम मिलिबो डीजल जाले जति मिलिबो गैस एलपीजी जाले कोन जति मिलुची केरोसिन जति जाले कोन जति मिलुची हां सर मिले कि एति एनर्जी ताले काहे होंदा ताले केरोसिन पेट्रोल के अलग अलग बिक्री होंदा सब तो गोटे करी बिक्री दियंते अब मिसे दियंते बिक्री दियंते मिसे किना काहे अलग अलग करी काहे बिक्री होची काहे पेट्रोल दाम ता अधिक रहउची डीजल दाम ता कम रहउची केरोसिन दाम आवरी कम रहउची काहे बिकॉज़ ऑफ दैट एफिशिएंसी गोटे ग्राम ऑफ पेट्रोल जति की तमरो एनर्जी प्रोवाइड करिवो सेति की तमरो 1 ग्राम डीजल सेति की एनर्जी प्रोवाइड करि परिबोनी जति की 1 ग्राम केरोसिन जति की एनर्जी प्रोवाइड करिवो 1 ग्राम पेट्रोल एनर्जी भीतर बहुत तफात अछि दैट इज कॉल्ड एज द एफिशिएंसी गोटे मोटर रो एफिशिएंसी कोन व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए मोटर इप्सिता
गोटे मोटर एफिशिएंसी केते एफिशिएंसी माने मु जानछि आउटपुट बाय इनपुट आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर हां तो तते जेति की तादर एनर्जी अछि सेति की एनर्जी रो जळे सला पर केते एनर्जी तते मिलुची सो दैट हम गाडीटा चालुची दैट इज कॉल्ड एज द एफिशिएंसी ऑफ दैट फ्यूल बुझिलु एफिशिएंसी माने केते यूजफुल एनर्जी ता से देई पारुची तो कैलोरीफिक वैल्यू जेमति बाहर करलु सेटा होची पर्टिकुलरली फूड आइटम पे व्यवहार करा जाए किंतु एफिशिएंसी हमर सॉरी फ्यूल केस रे फ्यूल आइटम पई हमर एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल टर्म का यूज करा जाए जिंस एका टर्म अलगा फ्यूल पई एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल फूड आइटम पई जनरली कैलोरीफिक वैल्यू को यूटिलाइज करा जाए बुझियला सेटा फार्मूलाटा कैलोरीफिक वैल्यू रो सर कोन कहलो डेल सर जो लिखते सर डेल डेल डेल्टा एच कंबस्टन लिखा हैतला डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करथली डायरेक्ट फार्मूलाटा कहथली काहे कि 1 ग्राम पई एडी ऐकिक धारा बा यूनिटरी मेथड को फॉलो करिवो डायरेक्टली कंबस्टन वैल्यू दे देले ताको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करिवो देन यू विल गेट योर कैलोरीफिक ओके ओके कहबार अर्थ से आतिला राइट डाउन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जार इच्छा जी फार्मूला मन रखो जार इच्छा नै से डायरेक्टली तमे बुझे देली 1 ग्राम पई केता बाहर करिवो so heat of neutralization so what will be your heat of neutralization what is your neutralization if you tell me what is neutralization कहो जल्दी कहो what is neutralization reaction hello yes sir what is neutralization reaction सर न्यूट्रलाइजेशन माने गोटे सब्सटेंस जहाँ भी प्रॉपर्टी अछि सेटा न्यूट्रल हे जो माने जेमते एसिड और बेस रिएक्शन करले केमिस्ट्री न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ला में कोन पढुचे भुवनेश्वरी यस सर कोन पढिचु केमिस्ट्री न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहले सुनिचु न्यूट्रलाइजेशन आगुरु यस सर और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहले कहा भीतर रिएक्शन को बुझाए केमिस्ट्री रे सर पॉलिसी की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हां कहो भुवनेश्वरी कहो neutralization reaction in which acid and base react quantitatively with each other एसिड बेस रिएक्शन करले बस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आ जाए यस सर ठीक क्वांटिटेटिव हो कि जते 5 ग्राम हो 10 ग्राम हो जहां हमें देखिया परे हमें सुनिचु छोट बळु न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओडिया रे कहले प्रशमनीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया जो माने ओडिया स्टूडेंट थिबे दे कैन नो ओके टर्म मन थला से मैं कह देली तो ताको को आ जाए हमरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गोटे एसिड बेस से रिएक्शन करले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आ जाए इप्सिता यस सर यू डोंट नो इट एसिड बेस रिएक्शन करले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आ जाए हां सर जानछि आ कोन न्यूट्रल करे कोन मते कहू दुलु नॉर्मल जिंसला जानछु काई तब न्यूट्रल न्यूट्रल ओडे कोन कहला मुझे बुझी पालिन से जिंस से कोन कहूची ओके सी हियर बेसिक टर्म गुडा मन रखिया चेष्टा करो ए जिंसडा पढा जायनी ओडा निजे निजे मन रखिया पड़िबो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस गोटे एसिड जेतले बेस से रिएक्शन करूची ब्रजेश्वर प्लीज टेल मी एसिड बेस से रिएक्शन करले प्रोडक्ट कोन बाहरिबो द डाइल्यूट एसिड बेस से रिएक्शन करले डाइल्यूट बाहरिबो सॉल्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्ट प्लस वाटर बाहरिबो कोनु सर लूण प्लस जल बाहरिबो सिंपल सर अम्ल क्षारक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करले लवण प्लस जल बाहरिबो एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर चलला सिंपल कथा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ताको हमर कोआ जाय गोटे एसिड अछि गोटे बेस अछि से मिसिबो मिसिक मोर एटी सॉल्ट दबो मते वाटर दबो चलला षष्ठ सप्तम रो तो या पड़ी पड़ी आस्तुओ जहां एसिड बेस रिएक्शन करले के लवण प्लस जल मिले सॉल्ट प्लस वाटर मिले दैट इज कॉल्ड एज योर प्रशमनीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चलला और डाइल्यूट फाइल्यूट कोन एसिड जदी रिएक्शन कला बेस सहित दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट एंड वाटर दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन माने कर मो एटी नेली एसिड नेली HCl मो एटी बेस नै गली मोर NaOH सो HCl जेतले NaOH सहित रिएक्शन कला इट विल गिव राइज टू NaCl मते एटी सोडियम क्लोराइड दबो वाटर दबो that is called as your neutralization reaction okay okay so ये थिला तुमको जस्ट पचार थिली बट मो काम वाला हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मु तमनो कहबी सही एका जिंस जेमति कंबस्टन देखिलो हीट एक्सचेंज केते होची एंथैल्पी चेंज केते होची सेमति एई जगह रे मध्य गोटे पर्टिकुलर रिएक्शन जार ना होची न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
जेतले गोटे एसिड गोटे बेस सहित रिएक्शन करूची सेटा हमर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुआ जाउची तो से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समय रे जति की एंथैल्पी चेंज हबो दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बुझियला the enthalpy of neutralization the particular definition hame likhiba write down the enthalpy of neutralization or heat of neutralization of an acid by a base is defined as the heat change is defined as the heat change when 1 gram equivalent when 1 gram equivalent of the acid is neutralized by a base the reaction being carried out in the dilute aqueous solution. There is a terms and condition. A reaction by what terms and condition achi, please note down it. The reaction should be carried out. The reaction should be carried out in dilute aqueous solution. Carried out in dilute aqueous aqueous dilute aqueous solution. This is the proper definition of your heat of neutralization. देखो जियो के जने मते गोटे डाउट पचारथिला जे स्ट्रक हमर मोल बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तार गोटे डाउट थिला हाउ टू कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट कैन आई नो द नेम ऑफ द स्टूडेंट हाउ टू कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट हेलो इज द स्टूडेंट इज हियर प्लीज टेल मी बेटा तोर डाउट थिला ना ग्राम इक्विवेलेंट को केमते कैलकुलेट करिवार मु से जिंसटा के बुझे देतन सेत में पचारथि तो नांडा ये गोटे पचारथिला मु देखि नजर पकई देली नहीं से हां कौन अविनाश बोधे यस सर हां नाम मन पड़ला अविनाश ओके सो ग्राम इक्विवेलेंट हम एटी बुझे देबी तो डाउट क्लियर हो जिवो एटी बुझिलु एटी दरकार अछि ग्राम इक्विवेलेंट पिला गोटे कहि दबा तो से जगह तो डाउट ता क्लियर होबो एक्चुअली मु एटी मोल हमर बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ता मु सेकंड बैच रे आरंभ करन नथिली आई थिंक मोर आरंभ होइतला फर्स्ट बैच रे मु सॉरी एटा ला हमर फर्स्ट बैच रे मु पढैनी सेकंड बैच रे मु पढौची जो माने करन नथिले सन जे फर्स्ट बैच रे बैकअप क्लास बुझिलु भाई डाउट हम बुझे देबी देख सो बुझी पलो डेफिनेशन बुझा पड़ला कौन कहि छी जे जेतले गोटे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड माने करे एठी मु लिखि जे एसिड और बेस लिखि छी तो मु लिखिबी केते इक्विवेलेंट हमर केते ग्राम इक्विवेलेंट र एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड केते बेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द बेस जेतेबेले 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड और जेतेबेले तमे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस को रिएक्शन करैबो सेतेबेले तमर जेतिकी एंथैल्पी चेंज होबो दैट इज कॉल्ड एज योर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बा तमे तमर जेतिकी ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्शन करैछ यू हैव टू नोटिफाई इट फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट गोटे ग्राम इक्विवेलेंट पे एंथैल्पी चेंज केते होची तमु सेटा नोटिफाई करबार अछि एंड दैट टर्म विल गिव यू द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बुझियला तो जदी तमे एटी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड नियो जेतेबेले से 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड ता 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस से रिएक्शन करिवो तो एसिड ता तमरो सॉल्यूशन में कोन प्रोवाइड करे H+ बेस ता तमरो कोन प्रोवाइड करे OH- ओके तो जेतेबेले तमे 1 ग्राम इक्विवेलेंट रो एसिड नैचो इट विल गिव राइज टू 1 मोल ऑफ H+ गोटे मोल रो H+ दबो 1 ग्राम इक्विवेलेंट रो बेस नेकी जेतेबेले तू ताको वाटर रे पकोउचू तो तोर सॉल्यूशन फॉर्म रे आनुचू ताको it will give rise to 1 mole of OH-. तो गोटे ग्राम इक्विवेलेंट रो एसिड बा गोटे ग्राम इक्विवेलेंट रो बेस जेतेबेले तू ताको सॉल्यूशन फॉर्म रे नबू जेतेबेले से तारा इंडिविजुअल आयन रे ब्रेक हबो it will give rise to 1 mole of H+ ion and 1 mole of OH- ion respectively बुझियला सेकंड दिन सा आ गोटे एटी कुआ गला द रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन डाइल्यूट
डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन अरे लिखा है ना नहीं समस्त डेफिनेशन लिखिले डेफिनेशन समस्त लिखिलो कौन कह जाय Yes, sir. डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन रे डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन तमर ओटे लिखा है जे रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ओके सो व्हाट दैट मीन काहेकि डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन सर काहेकि आपण कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन काहेकि लिखलेनी डेफिनेशन में काहेकि सर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन लिखा जाय छी ओके ठीक है पिला नेटा बना ओके तो काहेकि एटी मु डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन लिखी छी पिला माने हमर साधारणतः जदि हमें देखिबा हमर दी प्रकार इलेक्ट्रोलाइट था इलेक्ट्रोलाइट नुआ टर्म कहूची ओके जो माने बुझिबे बुझंतु जो माने न बुझिबे परिया दरकार नै पढेवा समय बुझिबो इलेक्ट्रोलाइट माने कोन गोटे एसिड गोटे बेस को हमर इलेक्ट्रोलाइट बोले मध्ये कहवा जाय इलेक्ट्रोलाइट कोन गोटे सब्सटेंस रे जो ताको सॉल्यूशन फॉर्म रे आनुचु ताको जदि एक्वस फॉर्म रे आनुचु इट विल गिव राइज टू आयन से आयन दबो तते बुझि होची ना नै तो जेतबेला हम गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट नौचे गोटे सब्सटेंस जे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कोन व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट पिला माने वीक इलेक्ट्रोलाइट रो अर्थ होची म इटे गोटे कंपाउंड रो एग्जांपल नेबी मने कर म इटे नेली CH3COOH CH3COOH this is your which acid this is your which acid acetic acid CH3COH okay so when it will break it will give rise to acetate ion and hydrogen ion CH3CO minus plus H plus CH3CO minus plus H plus but पिला माने एई जो कंपाउंड गुडा को किछिटा कंपाउंड अछंती जो माने कि 100% आयोनाइजेशन होंदी नाही कोन होंदी नी 100% आयोनाइजेशन होंदी नाही तो जदि 100% आयोनाइज न हेले मने करो मो पाखरे 100 टा CH3COOH अछि जेतबेले मु ताको सॉल्यूशन फॉर्म ने आनिली से 100 टा जाको CH3COH कोन हला से 100 टा जाको CH3COH आयोनाइज करलानी माने 100 टा जाको CH3COH भांगिलेनी CH3CO माइनस को H प्लस को तांको भितरु मने करो 80 टा कि 70 टा मने करो CH3COH CH3CO माइनस और H प्लस आयन देले तो आउ जो रेस्ट 30 टा के 20 टा बंची गले CH3COH तांको पय हमें केमिति चेक करबा न्यूट्रलाइजेशन टाको बुझी होचे ना जदी गोटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड टा गोटे पार्टिसिपेट कला जदी से 100% आयोनाइजेशन न होची ताले रेस्ट ऑफ द एसिड पय हमर न्यूट्रलाइजेशन ता तो भूल हे जिवो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो भूल हे जिवो एंथैल्पी चेंज ता तो भूल हे जिवो कैलकुलेशन करबाटा कारण आमे कहूचे जे 1 ग्राम इक्विवेलेंट रो एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट रो बेस को देखि कि ना हमें एंथैल्पी चेंज ता को मेजर करूचे तो जदी आयोनाइजेशन 100% न हुए ताले हमें तो सेठी 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोली ता कंसीडर करि परिबानी जदी भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमें ताको कंसीडर करले एसिड ता को तो सी हमको 1 मोल H+ तो दबोनी कारण 100% आयोनाइजेशन होउनी बुझी होची ना नै तो केते बेले 100% आयोनाइजेशन हबो पिला माने जदी तमे सॉल्यूशन टा को डाइल्यूट करी करी चलीबो देयर इज ए टर्म दैट इज कॉल्ड एज योर इनफाइनाइट डाइल्यूशन एठी लिखा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओके बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जदी हला तमे जते तमे डाइल्यूशन करी करी चलीलो then the compound will be ionized 100% then the compound will be ionized to 100% 100% से ionize हे जिवो यदि 100% ionize हे गला then you will get your H plus 1 mole 1 mole H plus तुमको मिली जिवो कि तमे जदी गोटे बेस नोचो जेंति कि मु कहबी मोर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH this is a weak base जे कि 100% आयोनाइज हुए नहीं तो याकू भी जदी हमें डाइल्यूट करबा ताले 100% आयोनाइज होबो एवं से हमको 1 मोल H plus दे परिबो then we can define our heat of neutralization or enthalpy of neutralization for that thing we are writing here the reaction should be carried out in dilute aqueous solution okay अरे बुझियला ना बुझियला नी yes sir Yes, sir. okay so this is your heat of neutralization किछि एडी हमर बड़ जिंस नाही सेही समान जिंस enthalpy of neutralization सेही तमर फॉर्मेशन बळे दबो you have to do it फॉर्मेशन बळे तमान मु दबो करिया पे you have to do it okay तो ये रहला तमर enthalpy of neutralization अच्छा ओटे क्वेश्चन करि थांदे write down a question गोटे क्वेश्चन लिखिला पिला माने गोटे क्वेश्चन करा heat of neutralization को नले करि परिबोनी भविष्य रे 0.1 mole of H2SO4 plus 0.15 mole of NaOH 0.15 mole of NaOH
मते क्वेश्चन देइची जे मोडा कहूनी माने फ्रेम करी क्वेश्चन को कहूनी जस्ट प्रैक्टिस में तमरा डिस्कशन करूची जे मो पाखरे मने कर 0.1 मोल रे H2SO4 अछि मने कर से 0.15 मोल ऑफ NaOH सहित रिएक्शन कला बुझी होची 0.1 मोल रो मो पाखरे H2SO4 अछि से वर्तमान 0.15 मोल ऑफ NaOH सहित रिएक्शन करिला ओके मते पचाची हमर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ता केते हबो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन केते हबो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बुझिलो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पचाची केते हबो ओके किछि तो देइनी क्वेश्चन देखु जो किछि देइ जे इथरे कोन देइची केवल अमाउंट दे देइची H2SO4 रो अमाउंट दे देइची NaOH रो क्वेश्चन भी तम माने न्यूट्रलाइजेशन ऊपर एई भलिया पाइबो तुमको एई भलिया दे देइथिबो मोल दे देइथिबो तुमको पचारथिबो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन केते तुमको डायरेक्टली मोल न देकी मोलारिटी दे देइथिबो वॉल्यूम दे देइथिबो ताल तमे मोल कैलकुलेट करि परिबोनी हेलो पिला माने कंफ्यूजन होची की सर सर आउट रे कोन कंफ्यूजन हला बोधे सेट पे समस्त साइलेंट हे गलो की ओके देखो सिंपल मते क्वेश्चन देइची बर्तन आगे क्वेश्चन सॉल्व करबा तापर अन्य जिंस आलोचना करबा मो पाखरे देइची 0.1 मोल ऑफ H2SO4 मो पाखरे केते मोल H2SO4 अछि 0.1 मोल रो केते मोल रो NaOH अछि 0.15 मोल रो NaOH से दि जण परस्पर सहित रिएक्शन करले पिला माने एटा गोटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ना नुहो यस सर ओके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अच्छा पिला माने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मते पचारती एंथैल्पी चेंज ता केते हबो बुझी होची एंथैल्पी चेंज ता केते हबो वर्तमान पर्यंत मु तुमको कोन पढाइलिनी जे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ना कोन जेतेबेले गोटे मोल रो एसिड सॉरी हमर 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जेतेबेले 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस से तो रिएक्शन करूची देन से जति के अमाउंट रो सेडी एंथैल्पी चेंज हबो दैट इज कॉल्ड एज योर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अरे ठीक ना नहीं यस सर ठीक हमें जानी छे आउ किछि पढी छे यस सर नथिंग एल्स क्वेश्चन टा वर्तमान सॉल्व करिवा केमति सर आपण देले आउ तो किछि कहिलेनी वर्तमान एटी क्वेश्चन टा हम सॉल्व केमति कोन करिवु सिखिबा दिके अच्छा सर एटी आउथरे बुझी दे कोडा बुझी दियो क्वेश्चन ते सर क्वेश्चन रे कोन पढ क्वेश्चन पढ 0.1 मोल ऑफ 0.1 मोल ऑफ H2SO4 plus 0.15 मोल ऑफ NaOH देइची हां सर कोन हला ताले यार अर्थ कोन किए का से तो मिसुची H2SO4 टा NaOH सहित मिसुची ओके H2SO4 टा NaOH सहित मिसुची H2SO4 टा गोटे कोन एसिड ना बेस एसिड NaOH टा गोटे एसिड ना बेस बेस एसिड टा बेस सहित मिसिले कोन रिएक्शन हबो रिएक्शन सर सॉल्ट और वाटर मिलियो हां सॉल्ट और वाटर मिलिबो अच्छा जदी गोटे एसिड बेस मिसी की सॉल्ट और वाटर दोजन सेटा को रिएक्शन को जाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तापर देखिलु ता तळे गोटे कोन लिखिछि म एडी डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन ता केते हो बस डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन केता हो बुझि पालु क्वेश्चन ओके निजे आंसर दबो निजे बुझि जो ओके तू बुझि जो टिके तोर खाली डाउट थिला जेबे हम तते पचली तू निजे कहलु निजे बुझला बुझिल ना निजे कह हैं ओके so you can understand so किछिटा कहिया भीतर ऑनलाइन क्लास रे किछिटा जिंस स्किप हे जाउती तो सेटा माइंड रे स्ट्राइक करे हम पचा देली जेबे तोर आपे निजे क्लियर तो पिला माने जेतोबेले तुमको न्यूट्रलाइजेशन एवला क्वेश्चन दबो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग तुमको गोटे रिमेंबर करिया गोटे जिंस मन रखिया पड़ियो रिमेंबर करिया पड़ियो कोन सर हम रिमेंबर करिवो पिला माने H2SO4 टा मोर एटी कोन दबो H+ NaOH टा मोर एटी कोन दबो OH- यस सर बुझि परछन ना OH माइनस OH- आयन दबो अच्छा ठीक है हम एटा लिबे यस जे सर मोर एटी एसिड रहिला एटी रहिला मोर बेस मोर प्रोडक्ट कोन मिलुची सेथरे मोर किछ कथा हता नै मोर रिएक्टेंट कोन अछि मु से विषय कथा हेबी मोर एसिड बेस अछि सर मते कहले एसिड मोर केते रहइबो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मोर बेस केते रहइबो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मु जानि छी मोर एसिड ता बर्तन एटी मते कोन दबो H+ दबो बेस ता मते एटी कोन दबो OH- दबो बुझियला नै मु कोन कहली पिला माने गोटे ग्राम इक्विवेलेंट एसिड माने केते मोल रो H+ दबो गोटे ग्राम इक्विवेलेंट जदी एसिड ता जत्ता को तमे पानी रे पकेइलो ताको सॉल्यूशन फॉर्म को आनलो ताले से केते H+ दबो 1 मोल ऑफ H+ अरे कहली परा 1 मोल 1 ऑफ मोल H+ ऑफ H गोटे ग्राम इक्विवेलेंट रो जदी तमे गोटे जे कोनसी प्रकार गोटे सब्सटेंस को जदी तमे ताको आयोनिक सब्सटेंस को पानी रे पकोउचो देन विल गिव राइज टू 1 मोल ऑफ H+ आयन माने एसिड को जे तमे गोटे ग्राम इक्विवेलेंट रो एसिड को वाटर रे पकेइबो देन विल गेट 1 मोल ऑफ H+ आयन
सेमती जदी 1 ग्राम इक्विवेलेंट रो बेस को जदी हमें पानी रे पकेला हम केते मोल रो OH माइनस मिलिबो 1 मोल ऑफ OH माइनस गोटे मोल रो OH माइनस तो जते बेले मोर गोटे मोल H प्लस गोटे मोल OH माइनस आयन सहित रिएक्शन करियो मते कोन दबो वाटर वाटर दबो अरे दबो ना नहीं यस सर तो ये जो रिएक्शन रेट हला H प्लस प्लस OH माइनस गिव राइज टू वाटर पिला माने जो रिएक्शन टा होची रिएक्शन पे एंथैल्पी चेंज हला -13.7 किलो कैलोरी केते किलो कैलोरी -13.7 किलो कैलोरी बुझी पालो एटा को हमको मन रखिया को पड़िबो इस वैल्यू हैज टू बी रिमेंबर्ड ए वैल्यू टा को हमें मन रखिले न्यूट्रलाइजेशन क्वेश्चन कर परिबा तो जेतेबेले 1 मोल H प्लस जेतेबेले 1 मोल OH माइनस आयन सहित रिएक्शन करिवो इट विल गिव राइज टू -13.7 किलो कैलोरी बुझियला केते किलो कैलोरी एनर्जी -13.7 किलो कैलोरी indirectly this value will give rise to the value of your enthalpy of neutralization बुझियो छी ना नहीं ए वैल्यू टा तमरा enthalpy of neutralization for 1 gram equivalent of the acid 1 gram equivalent of the base एटा तमरा प्रॉपर वैल्यू ए वैल्यू टा तुमको मन रखिया को पड़िबो मन रहि परिबो यस सर ओके जदी तुमको तमे देखिलो तमरो रिएक्शन रे अलग अलग सब मोल देइची तो तमे सेठी H+ आयन केते बाहरिबो OH- आयन केते बाहरिबो बाहर करि परिबो बुझियो ना नहीं तुमको जदी एसिड रो अमाउंट देइची बेस रो अमाउंट देइची बर्तन मते एठी देइची 0.1 मोल ऑफ H2SO4 मते देइची 0.15 मोल ऑफ NaOH तमु जदी ताको आयोनाइज करेबी मते एठी केते मोल रो H+ मिलिबो केते मोल रो OH- आयन मिलिबो जदी एठी मु मोर H2SO4 को आयोनाइज करैली मते H+ केते मिलिबो 0.1 मोल नो 0.1 into कहिथिली परा जेतेटा एटम थिबो ता सहित 0.2 मल्टीप्लाई मोल करिवो 0.1 into 2 तो 0. केते मोल 2 मोल 2 मोल अच्छा एठी मोर केते होची 0.15 मोल ऑफ NaOH तो एठी मोर जदी मु OH- आयन रो मोल देखिबी केते हबो सेही 0.15 कारण एठी OH तो मो पाखरे गोटे अछि 0.15 0.15 into 1 so it is equals to 0.15 एटा हला 0.15 एटा हला 0.2 मोल यस सर ओके अच्छा तो पिला माने हमें बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कोन पढिथिले लिमिटिंग रिएजेंट कांसेप्ट पढिथिले ना पढनथिले सेकंड बैच रो पिला माने जो मान सब क्लास करूथनि सेकंड बैच रे पढिथिबे तमर स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन जो करैथिली को रिएक्शन तमर को रिएक्टेंट सरी जीवो को रिएक्टेंट बळी जीवो रिएक्शन परे अरे करैथिली तो किछि जण थिले बुझिछ ना बुझिनो ठीक अछि जदि न बुझिछ मते को एटी बर्तन मोर H+ अछि 0.2 मोल मोर एटी OH- अछि 0.15 मोल तो मोर एटी H+ रिएक्शन करिवो OH- आयन सहित कोन दबो H2O तो मोर एटी H+ अछि 0.2 मोल मोर एटी OH- अछि 0.15 मोल बुझियला अरे बुझियला ना नहीं अच्छा यस सर गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल बुझिबा मने कर आज काली थिला हमर बदे काली नुआ पहर दिन बदे थिला हमर मार्गशीर मास गुरुवार हां समस्त ओडिया फैमिली हमर कोन हबो ओरा भात हबो डालमा हबो खाया पिया बढ़िया हबो मां तुम कोन करचंदी ना कदली पत्र भात दे देले तरकारी दे देले डालमा दे देले तमे देखिलो डालमा जति की दिया जायची भात सेति की हबनी तो डालमा जति की सरिया पर्यंत भात टाও खाइलो आउ जति की भात पड़ला से कोन हला थाली रे छोड़ा हला अरे ठीक ना नहीं अरे बुझियो ना बुझियो Yes, भात sir. जति की दिया जायतिला डालमा तरकारी से अनुसार सेति की दिया जाय नथिला डालमा तरकारी कम थिला भातटू तो तमे डालमा तरकारी सरिया पर्यंत भातटा को खाइलो जति की भात रही गला आउ खाइलो की ताऊ छाडी देलो बुझिला नहीं भात तरकारी सरी सरी हमर डालमा तरकारी सरिया पर्यंत भातटा को खियाला तो डालमा तरकारी पई जति की भात तरकारी सेति की हमें खाइ देलु किंतु जति की भात पड़ला सेति की मु छाडी देली अरे बुझिला ना बुझिला यस सर बर्तन एटी देखे बर्तन एटी बर्तन से कांसेप्ट को अप्लाई कर बर्तन मो पाखरे एटी H+ अछि OH- आयन अछि मोर H+ आयन अछि 0.2 OH- आयन केते अछि 0.15 मोल 0.15 अच्छा एमान को भितर कम किए हु इज द लेस वैल्यू 0.15 0.15 ता माने 0.15 निश्चित भाबरे H+ रो 0.15 मोल टा निश्चित भाबरे OH- रो 0.15 मोल से तो कंप्लीटली रिएक्शन करिवो yes sir
तो एठी मोर H प्लस थिला 0.2 मोल तो 0.2 मोल रु 0.15 मोल को फेडी दबु केते रहइबो 10 रु 5 गला 5 तो 0.05 मोल ठीक ना नहीं तो सर मोर रिएक्शन मीडियम रे 0.05 मोल रो H प्लस बळी जिवो मोर एठी 0.15 मोल ता रिएक्शन करिवो 0.15 मोल रो OH माइनस आयन सहित ठीक ना नहीं यस सर so this is called as a limiting reagent concept okay एटा को आजे केमिस्ट्री लिमिटिंग रिएजेंट कांसेप्ट तो एठी तमरो केते मोल रो एठी एसिड आ केते मोल रो बेस सहित रिएक्शन हला 0.15 मोल रो एसिड 0.15 मोल रो बेस सहित रिएक्शन कला अरे ठीक ना नहीं यस सर यस सर अच्छा Yes, तो sir. एठी जो तू वैल्यूटा मन रखी जो एटा केते मोल पाई तू जो रखी जो H प्लस OH माइनस वाटर एटा केते 30.7 जो किलो कैलोरी एटा केते पाई मोल 1 मोल पाई गोटे मोल पाई होजी माइनस 13.7 किलो कैलोरी तो 0.15 मोल पाई केते हबो माइनस 13.7 into 0.15 जदि गोटे मोल पाई सर आपण करला माइनस 13.7 किलो कैलोरी ताले 0.15 मोल पाई केते हबो माइनस 13.7 into 0.15 so your answer will be nearly minus 2.055 किलो कैलोरी केते आछी देखिलो सर लास्ट टाइम वाला सर लास्ट टा बुझी पलानी देखे तोते जो वैल्यूटा मन रखिया कहली H plus OH minus water दउजी डेल्टा H ता पई केते माइनस 13.7 किलो कैलोरी बुझिलु माइनस 13.7 किलो कैलोरी टा केते अमाउंट रो माने केते मोल रो H plus और OH minus आयन पई 1 मोल 1 मोल बर्तन आमे जो क्वेश्चन हमको एटी देइची आमे केते बाहर करले H plus हम पाखरे केते अछि 0.2 मोल OH minus आयन केते अछि 0.15 मोल तो आमे देखिले जे 0.15 मोल जेहेतु कम अछि तो एति की 0.15 मोल सहित OH माइनस आयन सहित तोर सेति की अमाउंट रो H प्लस का रिएक्शन करिवो तो H प्लस तोर एटी 0.15 मोल रिएक्शन करिवो आ जेति H प्लस रहला से बढ़ी जिवो सॉल्यूशन रे तो एटी 0.15 मोल रो एसिड ता तोर 0.15 मोल रो बेस सहित रिएक्शन करूची बुझिलो ना नहीं तो एठी जो तोर वैल्यू थिला एंथैल्पी चेंज सेटा थिला पर मोल पई गोटे मोल पई तो 0.15 पई मोल पई केता होबो सेति के मल्टीप्लाई करिया पड़िबो तो माइनस 13.7 किलो कैलोरी इनटू 0.15 अरे हबो ना हबनी बुझि परलो सर एटे H2O टा केते मोल होबो ताले H2 टा तोर एठी जदी 1 मोल रो एठी H प्लस फॉर्मेशन होची एठी 1 मोल रो OH माइनस आयन तो एठी 1 मोल रो H2O बुझिल ना बुझिलु ओके सर ओके एटा मन रहला ना मन रहला नेट रिलेशन केमती कैलकुलेशन हबो सेकंड क्वेश्चन तू करिवो अच्छा सर तो 0.05 रो जो मोल H प्लस टा बळी गेला सर सेटा सर कोन सी एमदी पानी रे भासी की रहइबो तार सांग के नांती से किछ दिन पर मरि जिवो बुझिलु तार काम किछ नै से सेमती केमिस्ट्री लैब रे पडी पडी रहइबो ताको आसी के फोपाड दबो दैट मच तार किछ काम नै सॉल्यूशन ता सहित मिसिया को के नांती से सेमती H प्लस टा पडी की रहइबो तार के नांती हो बुझिलु तो 0.05 mole it will left in the reaction medium clear यस तोर ता सहित किछ कथार्ता नै हो से सरी होला से गला तार से तार बळी छि ता सहित हमर कोनस प्रकार कैलकुलेशन किछ रिलेशन नै हबो एकड गला छि सर क्वेश्चन लेखा बटे तू कहिबो एटा मते राइट डाउन 100 ml of 0.1 molar H2SO4 100 ml of 0.1 molar H2SO4 plus 100 ml of 0.15 molar NaOH 100 ml of 0.1 molar H2SO4 plus 100 ml of 0.15 molar NaOH बाहर कर एंथैल्पी चेंज केता हबो डेल्टा H रिएक्शन केता हबो बाहर कर I think maximum students have already done my class in the second batch basic concept of chemistry so साहिल करि परिबो एटा तू तो अभी क्लास करू छुबी करि परिबो ओके लेट डू तो कर तो खाता रे कर तू करि सर मते कहबो
Okay, Ipsita, Yes, sir. explain the answer. Sir, ଏଇଟା ଯୋଉ 100 ml of 0.1 m H2SO4 ଦେଇଛି ତ ଏଇଟାରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ number of moles ବାହାର କରିଦେବା। Okay, ମନେ କର ଏଠି calculate କରିବା number of moles ମନେ କର यार N1 କେତେ ହବ number of moles? Sir, ଯଦି ମିଲିମୋଲ୍ ଏଟା ଯେହେତୁ ମିଲିଲିଟରରେ ଦେଇଛି ତ ମତେ ଯଦି କହ କଣ ହବ ଏଠି ଯାହା ଦେଇଛି ସେଠି କହ ଏଠି 100 ml ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମୋଲାରିଟି ଏତିକି ଦେଇଛି କଣ କରିବି ମତେ କହ ଆଗେ ସେ ମିଲିମୋଲ୍ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ତୁ ମତେ କହ ଏଠି 100 ml ଅଛି 0.1 ମୋଲାର ଭଲ୍ୟୁମ ଦେଇଛି ମତେ Sir, number ମୋଲାରିଟି of ଦେଇଛି moles equals to molarity into volume of the ବାସ୍ solution. ଓକେ ତ m1 into v1 ତ ମୋର ଏଠି ହଁ। m1 ଦେଇଛି 0.1 ମୋଲାର ଭଲ୍ୟୁମ ଟା ଏଠି ମତେ ml ରେ ଦେଇଛି ତ କଣ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋଲାରିଟି କହିବା ପାଇଁ ଲିଟର ରେ Literally. ml ରେ କରିବୁ ତ ମିଲିମୋଲ୍ ବାହାରିଯିବ ହଁ। ओके तो हमको मोलारिटी दरकार हमर नंबर ऑफ मोल्स टा दरकार हमर नॉर्मल टर्म रे हम किछि एपट सेपट करबानी ताको सिंपल तमर लीटर रे कन्वर्ट कर दियो तो v1 रेडी केता हो लीटर रे कन्वर्ट करले 0.1 0.1 liter. लेक एडी 0.1 केते गला तोर नंबर ऑफ मोल्स 0.01 हबो Yes, sir. एबे एडी बाबा एडी 100 ml ऑफ 0.15 मोलार एनओएच रे मते कोन हबो v1 v2 तो दे दीची केते एडी 100 ml m2 तते केते दे देची 0.15 m number of 0.1. moles मने करे n2 so n2 is equal to m2 into v2 molarity into volume so 0.15 into volume टा को लीटर रे कन्वर्ट करले 0.1 लीटर ठीक कहली या कोइ थन तो Yes, sir. Yes, sir. केते हला 0.015 एति हबो तो हाँ, sir. ओके तापर को तापर Sir, चलो या ପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉଟା limiting reagent ମାନେ ଯୋଉଟା ସରିଯିବ Very good. ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ 0.015 ମୋଲ୍ ଟା ଯୋଉଟା କି अच्छा ବେସ୍ ଟା माने ଦେଇଛି। तू कहबू नॉर्मल पिला केमि बुझिबे तू सर कहलु सर एठी देखो 0.015 अछि एठी आपनकर 0.01 अछि कम किए 0.015 हां कम टा हला तोर 0.015 अरे एठी तोर 0.01 अछि 0.01 तापर एठी किछि नै माने केते अछि आळु 0 एठी तोर 0.015 अछि एठी तो 0.01 रहला एठी तो 0.01 रहला सेकंड डेसिमल पर्यंत थर्ड डेसिमल तो एठी 0 तो एठी तो थर्ड डेसिमल तो 5 तो बड़ के सर 0.015 टा बड़ ए कहला भूल काई कहउलु 0.015 अच्छा तोर नंबर ऑफ मोल्स एठी 0.015 टा बड़ हला ता माने मो एठी कहरिबी जे मोर एठी H2SO4 रु एठी H+ आसीबो एठी NaOH रु मोर एठी OH- आसीबो दी जण जाको मिसिबे मिसिक मते एठी देबे कोन H2O तो एठी मोर H+ केते हबो केते केते H+ तोर एठी रिएक्शन करिवो सर 0.02 मोल 0.02 अरे 0.02 कोड आसिला पुनी सर H+ ना आगे से H2SO4 रो मोल टा बाहर कर देले बट H+ करला को 2 मल्टीप्लाई हेबो ना अच्छा अच्छा मुन देखिनि सर हम H+ ରୁ ତ H+ ରୁ ତ सर ଦିଟା ମୋଲ ଯିବ ନା हां ସେଠୁ बुझिले बुझिले मो एठी जान नथले H+ टा एठी हम बाहर कर सकते बोल भाबी तो H+ तमर एठी टोटल नंबर ऑफ मोल्स वाला 0.01 तो H+ केता हबो 0.01 into 2 0.0 आज्ञा एठी हमर केता हबो सही 0.015 हां OH- सही सेम टा ରହିବ 0.015 हबो अच्छा तो एठी हे जिवो कोन ना 0.0 2 केते 0.02 एठी तोर आज्ञा 0.02 आसीबो एठी तोर 0.015 आसीबो तो बड़ के मानक भितरु 0.02 0.02 0.02 0.02 आज्ञा टा हला बड़ कम जे सेति की तमरा यूज हबो ता माने एठी तोर आज्ञा H+ केते यूज हबो 0.015 OH- आन केते हबो 0.015 तो तोर एंथैल्पी चेंज टा केते माइनस होइଯିବ न्यूट्रलाइजेशन माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल तो गोटे मोल पय जदी एति गेला ताले 0.015 में केते हबो जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट योर आंसर हबो यस सर आज्ञा अच्छा नेक्स्ट तम रहिला ये क्वेश्चन करि परिबो एवला क्वेश्चन यस सर हां कर करिके आसी कि परिबो जा डाउट हो पचारिबो थर्मोडायनामिक्स रे ओके so this is called as your heat of सर neutralization कह सर काली गोटे आपण एग्जांपल टे करिथिले सेटा मु बुझी पार नथिले क्वेश्चन टा रखिछु हां कहू मते के हम पढे दे मते कहू ले कह पढे हां दिए सर
सॉरी जो हां ओके ये रहला तोर ठीक कर हम देखिने तोर कोन कोन अछि सेटा सिखेबा then write down heat of the solution then write down heat of solution heat of solution heat of solution so heat of solution कहले हमें कोन हो जाए first write down the definition सब सेम जिंस एका बलिया लिखि चलो the amount of heat the amount of heat the amount of heat evolved or absorbed the amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of solid is added to large excess of water बुझियला the amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of solid component is added to a large excess component of your water बुझे होची ना नहीं बटे solid component को water हमर देरे जेता हम ऐड करूचे excess amount of water रे जति के amount रो heat ता evolve होबो कि absorb होबो that is called as your heat of solution or enthalpy of your solution बुझेला ना नहीं clear yes sir एग्जांपल गोटे नै कि बुझिबा मने कर भाव मो पाखरे MgSO4 अछि मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 सो से मैग्नीशियम सल्फेट ता को कोन करिवे एटी वाटर देहरे पकेबी आई विल गिव इट इन द वाटर तो जेतोले वाटर देहरे पका जिवो तमर सेठी कोन हबो हाइड्रेशन हबो कोन हबो हाइड्रेशन so the enthalpy change here it is called as your delta H hydration enthalpy change during the hydration process okay ये हाइड्रेशन प्रोसेस है हेलो 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 अरे के कोन कहू ना कटि गला ये कोन हला हेलो 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 इज इट ऑडिबल yes sir कोन कटि जाइतला कि नेटवर्क no sir ओके ओके कहू न दिलो नहीं सर ये कोन गोटोडे पिला कोन 11 टा हे गला कि 11 टा हे गला बोधे पिला गोटोडे हाँ, खसिबे सर। लागिले कोन 11 हे आ 20 21 जण पिला थिले 15 हां ये सब खसिले तांगर टाइम पीरियड बेल बाजी गला घर गोटे बेल बाजी गला से पळेले सब देखो घंटे रो अधिक बस परिबे MgSO4 वाटर देरे पकेले प्रथम मोर एठी डेल्टा H हाइड्रेशन हबो तार कोन हबो प्रथमे तोर सब्सटेंस ता हाइड्रेटेड हबो हाइड्रेटेड एठी कोन फॉर्मेशन करिवो MgSO4.7H2 बर्तन एई बळे भाबे से हाइड्रेशन हबो कंपाउंड जेतो तमे प्रथमे तमे वाटर रे पकेइबो तमे तार देखिबो प्रथमे हाइड्रेशन हबो त प्रथमे तार हाइड्रेशन एंथैल्पी टा कैलकुलेट करा जाय बुझी होची तो वाटर रे बर्तन में एठी गोटे सॉलिड कंपोनेंट पकेइली जोटा कि मोर होची मैग्नीशियम सल्फेट ताकू वाटर रे पकेले प्रथमे तार हाइड्रेशन हबो सो इट विल गिव राइज टू MgSO4.7H2 तो डेल्टा H हाइड्रेशन ता मोर एठी कोन हबो नेगेटिव हबो डेल्टा H हाइड्रेशन एठी नेगेटिव हबो कारण एठी हीट ता रिलीज हबो एनर्जी रिलीज हबो बुझियला ना नहीं तो वर्तमान MgSO4.7H2 ता फुणी एटा तो ऑलरेडी वाटर तो अछि तो MgSO4.7 वाटर ता वाटर देयर जेतळे सेतळे अछि सिए हाइड्रेशन हे सरिया परे तार आयोनाइजेशन हबो कोन हबो आयोनाइजेशन हबो तो एठी वर्तमान जो MgSO4.7H2 अछि वर्तमान सेटा MgSO4.7H2 aqueous फॉर्म को जीवो को फॉर्म को जीवो aqueous फॉर्म को जीवो बुझियला सर एटा रिपीट करिवे सर पूछिलनी एटा सर एटा रिपीट करिवा उतरे बाबा ठीक है दी जण कहले बुझ को सुनी पनी रिपीट होइबा तो बुझियलानी सर आज्ञा सर राइट डाउन कौन तो डेफिनेशन में कौन पढ़िले द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड अरे ठीक ना नहीं द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड केते बेले when 1 mole of the solid is added to large excess of water जेतबेले गोटे सॉलिड कंपोनेंट को तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रे ऐड करूचो सेतबेले तोर सॉल्यूशन फॉर्मेशन होची ओके किबा हमें याको एवला आज्ञा मध्ये सर आउट के एप्रोप्रिएटली ताको डिफाइन करूची सुना समस्ते लिखिबिनी मु
बड़ डेफिनेशन गोटे कहूची तो माने सुनो ओके जोडी बुझी परिबे मत पचारिबे द एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन of a substance in a particular amount of the solvent it is defined as the enthalpy change माने कोन amount of heat energy released or absorb हे पारे रिलीज हे पारे मु जानिनी कोन हबो सेटा absorb हे परिबो रिलीज भी हे परिबो केते बेले हबो now when 1 mole of the substance is dissolved in a specified amount of solvent गोटे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जेतेबेले गोटे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रे मु ऐड करिवि देन आई विल गेट दैट सॉल्यूशन अरे ठीक ना नहीं तो जेतेबेले गोटे मोल रो सब्सटेंस को गोटे पर्टिकुलर अमाउंट रो सॉल्वेंट रे ऐड करा दिबो से समय रे जेति की अमाउंट रो एंथैल्पी चेंज होबो दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन बुझियला नहीं अरे क्लियर यस सर okay so ये वाला तुम्हारा प्रोसेस बट यू हैव टू टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट जो लिखा हैतला मोर जो पूर्व डेफिनेशन में तुमको कहली एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तमे सेटा कहि परिबो जे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ता माने जति के अमाउंट रो तू सॉलिड नोचू जति के अमाउंट रो तू सॉल्यूट नोचू सेति की अमाउंट पई जति की मात्रा रे तोर सॉल्वेंट दरकार सेति की तते नेबागु पड़िबो एमिति जेंति न हबो जे सॉल्यूट रो अमाउंट ता तोर सॉल्वेंट रो अमाउंट अधिक आइबो सेट पई कोआ गला लार्ज एक्सेस अमाउंट ऑफ योर वाटर बुझी पालो ना नहीं सॉलिड अपेक्षा तोर सॉल्वेंट रो मात्राटा निश्चित भाबरे अधिक रहबा दरकार सेट पई तते कोआ गला जे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर सो दिस इज द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ योर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अरे बुझियला नहीं आज्ञा सर ओके तो हमर विभिन्न प्रकार सब सॉल्यूशन रो एग्जांपल अछि तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन रे हमर को बळी भाबे विभिन्न प्रकार प्रोसेस ता घटुची से विषय वर्तमान बुझिबा जोडे तमे कहला सारा में बुझी पालु बुझी होची मु वर्तमान पर्टिकुलर एग्जांपल लेमिनी गोटा हाइपोथेटिकल कंपाउंड ने की बुझेबी तम माननकु मने कर मो पाखरे गोटे सॉलिड कंपोनेंट अछि लेट इट इज ए बी कोन अछि एटा ए बी अछि मो पाखरे ए बी ता मोर वर्तमान सॉलिड कंपोनेंट मने कर इफ सेदा बुझी होची ए बी ता वर्तमान मोर एटी सॉलिड कंपोनेंट अछि ब्रजेश्वर कोन नेली बुझी पालु एटा होची गोटे आयोनिक सॉलिड टे ए बी होची गोटे आयोनिक सॉलिड टे एठी मोर a + b - एकाठी हेक अछंती एटा होची गोटे आयोनिक सॉलिड टे बुझियला ना नहीं तो जते बेले मु एठी आयोनिक सॉलिड ता नेबी ए बी नेली ताकू वर्तन जते बेले मु वाटर रे पकेले मोर कोन हबो ना सेटा आयन रे भांगी जिवो ओके जे सेटा बुझी पालनी डायरेक्ट कहउतली एटा ता तळु को आसी बुझौची टिके देखो जेतळे मन कर गोटे आयनिक कंपाउंड को नेकी मु वाटर रे ऐड करली देन इट्स आयन्स a + b - अरे ठीक ना नहीं a + दबो b - दबो अरे सेंती कहले तुम बुझी परिबो ना NaCl मन कर मो पाकर अछि ताको जदि मु वाटर रे पकेइबी तार मते कोन दबो Na+ दबो Cl - दबो तो जेतळे एठी मु ab कंपाउंड ताको वाटर रे पकेइजी त मोर से a+ दबो b - दबो अरे ठीक ना नहीं यस सर तो जति की एठी एनर्जी एक्सचेंज हबो दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी कोन को जाय ताको लैटिस एंथैल्पी जोडा पूर्व क्वेश्चन ने बुझौतिली पूर्व एग्जांपल सेटा त मु डायरेक्ट बुझौतिली एटा स्किप कर देतिली मु कहली बुझी परिए पिला माने बट टिके डाउट क्रिएट हला सेत पई पुनी पछुक आसी एठी बेसिक रु बुझौची तो ए बी मोर रहिला आयोनिक कंपाउंड ताकू जेतळे मु वाटर रे पकेली इट विल गिव राइज टू इट्स स्पेसिफिक आयन्स एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break this compound into its individual ions in the aqueous solution is called as lattice enthalpy. Are clear or not? Lattice enthalpy or lattice energy कहा जाएगा. What is lattice enthalpy? Lattice enthalpy कहला में कौन बुझीबा? Periodic table पढ़ाई थी ली. Lattice enthalpy, lattice energy, bonding में भी पढ़ाई थी. कौन होगा lattice energy? अरे लैटिस माने कोन गोटे सब्सटेंस को भांगिया पाई अरे मो पाखरे गोटे सब्सटेंस कंपाउंड अछि एबी तांको भितर आयोनिक बॉन्ड अछि तो निश्चित भाबरे बॉन्ड एनर्जी थिबो तो सेति के अमाउंट रो एनर्जी टू अधिक एनर्जी प्रोवाइड करले सारे बॉन्डडा भांगी जिवो आपनकर आयन अलगा हे जिवे समाने सॉल्यूशन तो दैट इज कॉल्ड एज योर एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी अरे करेक्ट और नॉट
dissociation of the ionic solid into its free ions. Dissociation of the ionic, जो मैंने बुझी पारन definition लेखो lattice रो. Dissociation of the ionic solid into its free ions. The amount of energy required for this process is called as lattice energy or lattice enthalpy. Okay. The dissociation of the ionic solid into its free ions, the energy required for this process is called as lattice energy or lattice enthalpy. अरे बुझियला ना नहीं? Yes sir. Okay. तो जेतेबेले तू एठी वर्तमान एठी सॉलिड स्टेट रे ताको वाटर देहरे तू ताको पकोचू समाने लैटिस एनर्जी रे प्रथमे भांगिले बुझि होची ना नहीं लैटिस एनर्जी रे भांगी सारिबा परे सॉल्यूशन अछंती वर्तमान आयन गुडाको सॉल्यूशन रे वर्तमान आयन गुडाको अछंती तो तांको चारिपटे कोन हबो वाटर मॉलिक्यूल गुडा घेरी जिवे तुमको हाइड्रेशन विषय पढाइतिली पिला माने केमि तमर हाइड्रेशन हुए पोलैरिटी वाटर मॉलिक्यूल केमि चारिपटे घेरी जाए देखैतिला नहीं सबु silent. Do I will tell or not? I will end the class here. Yes sir. Yes, sir. So Yes, do sir. you are hearing? Then just Sir. interact with me. Yes, Already sir. 15 students. Tell me. ये मतलब हाँ कि ना मुझे जानी पानी मीटिंग चलती कि नहीं कटी होजी बेले बेले देखो तो मु तमनु कहिथिले ना नहीं मो पाखरे जदी Na+ रहिला Cl- रहिला अलग आयन अछि माने केमिति ता चारिपटे वाटर मॉलिक्यूल गुडा घेरी जिवे हाँ, sir. Yes sir. तो कौन कहा जाए हाइड्रेशन कहा जाए कौन कहा जाए हाइड्रेशन Hydration. सॉल्वेशन ए सब Hydration. टर्म रे ताको एक्सप्रेस करा जाए ओके तो जते बळे एठी मोर A+ आयन B- आयन फॉर्मेशन हला लैटिस एंथैल्पी द्वारा ता परे वाटर मॉलिक्यूल द्वारा ए आयन गुडा को हाइड्रेटेड हेबे कोन हेबे हाइड्रेटेड हेबे समान एक्वस स्टेट को जिबे A+ हियर इट विल बी एक्वस B- हियर इट विल बी एक्वस ओके A+ B- aqueous state को जिबे एटा हला तमरा स्टेप 1 जते बेले तमे गोटे आयोनिक सब्सटेंस को पानी रे पकोचो सेते बेले दीटा स्टेप हुए प्रथम स्टेप रे समाने तांकर इंडिविजुअल आयन रे भांगी जानती द्वितीय स्टेप रे समानकर हाइड्रेशन हुए सॉल्वेशन हुए एंड दैट अमाउंट ऑफ एंथैल्पी which is used during this process that is called as delta H hydration कौन को जाय ताको delta H hydration अरे बुझियाला ना बुझियाला नी सर आउ थोड़े बुझे देबे तोर एबी कंपाउंड टाको जते बेले वाटर रे पकेइलो इट विल ब्रेक राइज टू A+ एंड B- से भांगीबो एवं काहा को जन्म दबो तार इंडिविजुअल आयन्स मानन को से प्रोड्यूस करिवो बुझि होची ना नहीं जो आयोनिक कंपाउंड टाको वाटर रे पकेइबो तार इंडिविजुअल आयन गुडा को वाटर रे प्रोड्यूस हबो कि नहीं आज्ञा सर तो माइक टाको पाखु काणे आज्ञा सर कह मते गोटे आयोनिक कंपाउंड मुते कहबी NaCl गोटे आयोनिक कंपाउंड आज्ञा सर ताको पानी रे पकेइबू आज्ञा पकेले कोन हबो तार इंडिविजुअल आयन रे भांगीबो माइनस NaCl ला इंडिविजुअल आयन किए Na+ और Cl-। बस Na+ और Cl- रे प्रथमे ब्रेक हबो ए जो प्रोसेस ता हबो ता पई जो एनर्जी दरकार एंथैल्पी चेंज हबो ताको हमर कोन कुआ जाय लैटिस एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी बस वर्तमान तर आयन भांगी गला आज्ञा वर्तमान आयन गुडा को कोठी अछंती पानी भितरे फ्री स्टेट रे अच्छा माने वाटर भितरे समान अछंती तो वर्तमान आज्ञा वाटर मॉलिक्यूल कोन करिवे से आयन गुडा को हाइड्रेशन करेबे सॉल्वेशन करेबे तांकर वाटर मॉलिक्यूल गुडा को आयन चारिपटे घेरी जिवे ताको हमर हाइड्रेशन प्रोसेस कुआ जाय बा ताको हम सॉल्वेशन प्रोसेस बोली को बुझिल ना नहीं सो दैट मोर आज्ञा एटी सर आयन गुडा को तांकर एक्वस स्टेट को कन्वर्ट हेबे तो ए जो प्रोसेस ता रहिला तार इंडिविजुअल आयन रो एक्वस स्टेट को कन्वर्ट हेबा पर्यंत ताको हमर कोन कुआ जाय हाइड्रेशन प्रोसेस बा सॉल्वेशन प्रोसेस तो ये जो हाइड्रेशन प्रोसेस और सॉल्वेशन प्रोसेस रे तोर जति की एंथैल्पी चेंज हबो दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कोन कुआ जाय एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हाइड्रेशन बात का हमर कुआ जाय हाइड्रेशन एनर्जी बात का हमर कुआ जाय हाइड्रेशन एनर्जी बुझियला आज्ञा सर ओके के बुझि पाला नेति के बुझि पालानी yes or no I am not getting any Yes, answer then what I will बुझिएगा what I सर will understand please tell me then I will tell Yes sir. हम बसिबा एठी चलो
11:30 12 पर्यंत बसथिबा आ कोन यू विल नॉट टेल मी देन व्हाट आई विल अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी जदी मु तुमको गोटे क्वेश्चन तम मते पचारला मु जो तुमको आंसर न दे ता तमे माने कोन बुझिबो को ताले मु से जिंसरा बुझी बोली मु बुझी यू आर रिमेनिंग साइलेंट मु बुझुजी तमे लेखु जय कोन करछो जदी खाली कह देन यस सर हमें सुनुजो एंड वेट आई विल प्रोसीड मु कोन बुझी तमे निजे को क्लियर हला दीटा प्रोसेस जेटा कॉम्प्लेक्स जिंस रहउची हमें तो धीरे धीरे बुझौचे यस सर मतलब तुमको देली डायरेक्ट एग्जांपल हमें बुझी पाले इसमें हमें पछ प्रोसेस को आसी धीरे धीरे बुझुचे तो जो माने बुझिया कहले मु समान में अछि बट जते देखो पिला माने केही ना लीव करलेनी 13 स्टूडेंट्स आर देयर हां बोरिंग एकदम बोरिंग हे गला मानो पई बट स्टिल आई एम सेइंग अप टू 11:30 मजे डाउट क्लियरिंग कहि दिली किंतु सेव हेलानी ओतन टाइम सरलानी अगेन मते नेक्स्ट क्लास पर जीवा पड़िबो ई भी सरलानी और 2-3टा अछि तुम बुझी पाना आराम से बुझेउ जिमु बुझो यस नो कहले रिस्पांस करले मु सने किछि ओटे कहबी ओके सी हियर तो दीटा प्रोसेस रहला ओके अच्छा पिला माने जदी बर्तन डायरेक्टली बर्तन मु सॉलिड को एक्वा स्टेट पर्यंत कन्वर्जन हेबार मोर जति के एनर्जी एक्सचेंज होउची जो दिन नै एटा तमरो दीटा सब स्टेप रहला जदी हमें डायरेक्टली देखिबा केते एनर्जी एक्सचेंज होउची दैट इज कॉल्ड एज योर डेल्टा एच सॉल्यूशन एंथैल्पी चेंज इन ए सॉल्यूशन प्रोसेस so we can write here delta H solution is equal to delta H lattice plus कौन हबो को delta H हाइड्रेशन lattice enthalpy hydration enthalpy दीटा जाको enthalpy को मिसेइबो ताल तते कोन मिलिबो सॉल्यूशन मिलिबो एटा मु काहे की कोन डाउट थिला कोन कहलु बेटा सर गुटे कथा पचारबार थिला हां कह बाबा सर ए जो लैटिस एंथैल्पी सर फ्री स्टेट रे जो आयन गा रहिले हां तो सर सेटा जेता फ्री स्टेट रे एते बंत एक्वा सॉल्यूशन न हेई थिबो सेटा को जेतले एक्वा सॉल्यूशन हेई जिवो तो सेटा को हाइड्रेशन एंथैल्पी को आ जाय हां माने इंडिविजुअल आयन माने प्रथमे भांगीबे बुझिलु ता पय वर्तमान एनर्जी लागिवो पानी भीतर पकेला पर ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर द इंडिविजुअल आयन विल बी सेपरेटेड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर लैटिस प्रोसेस तो लैटिस प्रोसेस रे तोर कोन हबो जति के एनर्जी एक्सचेंज हबो तू ता कहू डेल्टा एच लैटिस तो वर्तमान आयन गुडा को भांगिला सेटा तोर प्रथम स्टेप आयन गुडा भांगी सला पर आयन चारिपटे वर्तमान वाटर मॉलिक्यूल गुडा घेरी जिवे जोटा को हमें कहू सॉल्वेशन प्रोसेस एवं समान को से एक्वा स्टेट को कन्वर्ट करिवे तो सेही प्रोसेस तो हमर को जाउची हाइड्रेशन प्रोसेस सॉल्वेशन प्रोसेस जति के एनर्जी एक्सचेंज होउची ताको मु कहूची डेल्टा एच हाइड्रेशन बा हाइड्रेशन एनर्जी बुझिलु आज्ञा सर ओके तो ओवरऑली से प्रोसेस ता देबे प्राय फर्स्ट स्टेप एटा हला हमर प्रथम स्टेप एटा हला हमर फर्स्ट स्टेप मु कलर चेंज कर दोउची दिस इज माय फर्स्ट स्टेप दिस इज माय सेकंड मतलब फेज दिस इज माय थर्ड फेज तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनटा स्टेट देई कि मु आसुची बुझी होची ना नहीं तो फर्स्ट फेज रो सेकंड फेज को आसीबाटा होची गोटे प्रोसेस सेकंड फेज रो थर्ड फेज को आसीबाटा होची गोटे प्रोसेस यदि हमें ओवरऑल प्रोसेस टा को नजर पकेबा ए बी रू डायरेक्ट हमर एक्वास को कन्वर्ट करियार प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज योर डेल्टा एच सॉल्यूशन बुझियाला ना नहीं मोटा काहे कोन मानंगो कारण गोटे कांसेप्ट अछि दैट इज कॉल्ड एज योर हेस लॉ बोली गोटे कांसेप्ट अछि सेटा कहि सारथिला पर तमे एटा कहितली कि बेटर बुझि जांदो सेट पे एटा हम कहि नथिली ओके डायरेक्टली सेटा गोटे एग्जांपल देई बुझे दोथली हेस लॉ टा कहितली तमु एटा कहिथांदी हेस लॉ टा जस्ट या पर पढिथांदी मु ओके तो जेते बेले हेस लॉ कहबार अर्थ होची पिला माने एटा बुझिलो समस्त खाता रे एटा लिखिलो आज्ञा सर मोटी के लिबे भी टिके आज्ञा सर ओके हेस लॉ टा टिके खाली जस्ट खाली कहि दोची नेक्स्ट क्लास रे हम तो भलसे बुझिबा ए देखो माने करे एटी मोर ए रहिला एटा मोर एटी डी को कन्वर्ट हबो मोर फाइनल प्रोडक्ट होची के डी सब पिला एक्टिव रहबे मो सहित कहिबे जो मानकर बैकग्राउंड नॉइज अछि समान न कहले चलिबो जो मानकर नॉइज नाही दे हैव टू टेल विथ मी सो देन मु जानिबी पिला माने कंसंट्रेटेडली मो कथा सुनुचंती ओके तो वर्तमान मोर रिएक्टेंट एटी के अछि ए प्रोडक्ट के अछि डी डी वर्तमान मु ए रु डी को जिबी लेट मु वर्तमान ए रु प्रथमे बी को गली बी रु वर्तमान प्रथमे सी को गली सी रु वर्तमान सॉरी लिखिबा बोले गला बी रु वर्तमान मु मने कर एटा लिखि दबा बी रु एटा टिके आरो मार्क बोलला बी रु वर्तमान मु सी को गली सी रु वर्तमान मु डी को गली तो एठी मोर ए रु बी को आसिला बेले मने कर एंथैल्पी चेंज हला डेल्टा H1
B रू C को आसला बेले मोर एंथैल्पी चेंज होला डेल्टा H2 C रू D को आसला बेले माने कर मोर एंथैल्पी चेंज होला डेल्टा H3 एवं मोर A रू D को गला बेले मोर एंथैल्पी चेंज माने कर हेगला डेल्टा H बुझियला मते पचाची A रू D को गला बेले तो एंथैल्पी चेंज ता केते हबो तो सेठी कोन करिवो तोर जो इंडिविजुअल स्टेप अछि सब स्टेप प्रथम स्टेप रे तू A रू B को जाउछु देन B रू C को जाउछु देन C रू D को जाउछु तो इंडिविजुअल जो स्टेप रहला तार जदी हम एंथैल्पी टा को ऐड कर दबा देन वी विल गेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन सो हियर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 बुझियला दिस इज एटा तो हेसेस लॉ ओके सो ए जिंसटा कहिथिले तुमको सेठी मु कहिथिले तुम बुझितन जे काहे कि सर आपन डेल्टा एच सॉल्यूशन टा डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन हला बुझि होची तो सेठी में मडा रखिथिली से जगह रे ओके किछटा जिंस बळी गला तमरो क्लास होची का बिया यस सर ट्राई स्टार्ट करना दी बोले सर सेट पई देखो न स्टार्ट करना ना एटा कटि जबो तो सर स्टार्ट करिया पर्यंत हमें पढिबा बुझि पाला वर्तमान सॉल्यूशन टा जो माने नहांती दे विल सफर बट आई विल से जब तक क्लास स्टार्ट है नहीं मु कहि चलीबी ओके जो माने काई क्लास स्टार्ट गले दे विल सफर फॉर दैट सो आई विल हैव नो प्रॉब्लम विथ दैट प्रोसेस बुझि पाला जिंसरा के बुझि पालानी ओके क्लियर एवरीवन ए जिंस जे तमु दिया गला सॉल्यूशन मु करेबी क्वेश्चन होची आर ओटा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अछि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम डे करेबी बुझियोची बट मु लेस हमर जो सॉरी हमर जो रहिला लॉ टा एस लॉ टा ताकू डे भलसे बुझेई दिए देन नेक्स्ट प्रोसेस रे हम सेटा को अधिक आलोचना करिवा बुझियोची नेक्स्ट राइट डाउन आई विल टर्म लेखो बॉन्ड एनर्जी राइट डाउन बॉन्ड एनर्जी व्हाट इज योर बॉन्ड एनर्जी जागा छाडिउ कोडा प्रॉब्लम पई हेसलो नहीं नहीं छाड़े दरकार नहीं एकाथरे डायरेक्ट प्रॉब्लम हेले लिखि दबो सेठी हला नेक्स्ट क्लास रे लिखिबो जेतला प्रॉब्लम हबो मु को बर्तन डेफिनेशन उडा कहि दोची प्रॉब्लम जेतल करैबा सेतल लिखिबो तोर जोडी प्रॉब्लम लिखिया କଥା हो हला जागा छाड़े दरकार नहीं देखे bond energy what is the bond energy write down the amount of energy required the amount of energy required to break all the bonds to break all the bonds of 1 mole of gaseous compound 1 mole of gaseous compound into their gaseous atom is called as bond energy. That is called as your bond energy. लेखो बोल से लेखो जल्दी के bond energy जस्ट के बागे के लिखी छी नले बॉन्ड एनर्जी ऑलरेडी हमें जहां पढिथिले पीरियोडिक टेबल ऑफ बॉन्डिंग रे दैट द सेम थिंग इन वाज इन बॉन्ड फॉर्मेशन हवा पई जेति के एनर्जी दरकार त बॉन्ड भांगिया पई मध्ये तते सेति के एनर्जी लगाया पड़िबो किंतु हमर जो बॉन्ड एनर्जी अछि हमें एटी बॉन्ड भांगिबा उद्देश्य रे ताको डिफाइन करूचे ओके सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड केते अमाउंट रो एनर्जी तते दरकार टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स सबु तक बॉन्ड भांगिया पई of 1 mole of gaseous compound तो the gaseous compound को तते नेबा पड़िबो काहे ना gaseous state रे तोर एटम गुडा सब अलग अलग है कि थांती इंटर एटॉमिक डिस्टेंस तोर अधिक थाए बुझियो जी तो गोटे एटम रो अट्रैक्शन फोर्स बा रिपल्सन फोर्स तोर अन्य एटम ऊपर पड़िबो so that you can find out the bond energy appropriately सेट पॉइंट लिखा देते gaseous compound को तार gaseous atom को भांगिबा पई जति के अमाउंट रो एनर्जी दरकार पर मोल पई that is called as your bond energy बुझियला sir are clear yes sir okay so जदि तुमको बॉन्ड है तते देखिबो ब्रजेश्वर तो ओटा क्वेश्चन मते पचाइतले बॉन्ड एनर्जी ऊपर ओके म आशा रखि देली आज क्वेश्चन ना मुडी डिस्कशन करि थांती बट किछि सरीलानी जिंसटा टिके रहिला तमे करियलानी देख एठी तो पिला माने जदि तुमको गोटे कंपाउंड रो बॉन्ड एनर्जी दिया जाईची तमे ओवरऑल रिएक्शन नो केमती एंथैल्पी चेंज बाहर करिवो राइट डाउन एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन is equal to summation of bond energy of the reactant minus summation of bond energy of the product
summation of the bond energy of the reactant minus summation of the bond energy of the product. Okay, so delta H reaction, it is equals to summation of the bond energy of the reactant minus bond energy of the product. हबो bond energy देइथिले डायरेक्ट बाहर करि परिबो, अरे करि परिबो ना करि परिबोनी? Yes, sir. Okay, so this is the thing. ये रहिला तमरो बॉन्ड एनर्जी विषय रे न्यूमेरिकल किछि करैनी करैबी. ओके, तो बाकी पिला माने ये थिला तमरो ओवरऑल थर्मोडायनामिक्स एस लॉ टा जहा जति कहली न्यूमेरिकल बेला करला बेले बुझिबो. तो नेक्स्ट क्लास देयर विल बी योर न्यूमेरिकल और जहा कोन डाउट पचारथलो कहिथिले आज करी बोली बट सल्लानी तो मनो ये पचारियर बुझेबार टी टाइम होला. तो नेक्स्ट क्लास वी विल डू दैट. ओके, यदि हबो मु सान कहि किना रविवार किमा सोमवार जदि हबो गोटे एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करैबी फॉर योर डाउट्स and also for this numericals. Otherwise from the normal class we will do the doubt clearing and also the problem solving of your thermodynamics. Okay, so is the overall आउ जति किटा किछि एक्स्ट्रा जिंस अछि ताकु मु न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू रे देखि ताकु बुझेइबी. ओके, नले ओवरऑल thermodynamics रे हमर एति कोछि नॉर्मल जिंस हेस लॉ टा जति कहली दैट इज द नॉर्मल हेस लॉ. डेफिनेशन किछि कहबुनी हमको देइ देबी नोट तमे सेतु टिके पढिबो. न्यूमेरिकल बनेला बेले आउ किछि सेठी क्लियर आंसर हो तमरा बुझियला. Yes, ଆଜ୍ଞା sir. sir. So do everyone समस्ते thermodynamics रा प्रॉब्लम बनाओ. ओके, देखो कोठी कोन प्रॉब्लम फेस करूछो जेतोले तमर न्यूमेरिकल क्लास टा हबो. नेक्स्ट क्लास टा न्यूमेरिकल सब तक जिंस त मु डिस्कस करबी. बॉन्ड एनर्जी रे देखेबी केमदी होउची, हेस लॉ को अप्लाई करी केमदी होउची, सॉल्यूशन रो हम केमदी बर्तन एनर्जी बाहर करछे हाइड्रेशन को और लैटिस एनर्जी यूज करना से जगह आउट क्लियरेंस आसीबो. तो स्टार्ट एवरीवन. ओके, थर्मोडायनामिक्स रा प्रॉब्लम करिया स्टार्ट करो. जहा जोटी डाउट अछि बाहर करो होला. बुझियला. Yes, Yes, sir. I hope these 14 students are here in the meeting and they are waiting for extra 30 to मतलब 30 minutes रो मोर त माने वेट करलनी. आई होप कि एही 14 जण को मु रिजल्ट आशा करूची. बुझि होची ना नहीं? निश्चित भाबरे रिजल्ट तमे 14 जणकर भितरु निश्चित को पिला नेक्स्ट ईयर रे जाई को कॉलेज रे बसिथिबो. आई होप कि तम मानु भलो रिजल्ट मिलु. ओके, कारण जो पिला माने वेट करि परनांती गोटे क्लास में ये माने अधिक समय बसि परनांती गोटे जगह रे obviously तांगर पेशेंस नहीं बसिया पे. So they don't do in the better in the future. I hope तमे 14 जण जो अछ better result करिवो. Okay, so go and do your thermodynamics question. Sorry